हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित चड्ढा आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ MS एक्सेल की पार्ट 2 की अनदर 50 शॉर्टकट कीज़। तो चलिए शुरू करते हैं MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम आपको 51 से लेके 100 तक की शॉर्ट कीज़ बताएंगे। गाइस, पार्ट 1 में मैं आपको पहले ही 50 शॉर्टकट कीज़ बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आगे की 50 शॉर्टकट कीज़ के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। 51th की है F2 which is used to edit a cell। 52 कीज़ है Control N which is used to go to the last cell in a workbook। Another key Control F2 to open the print preview window। Another key Control F1 which is used to expand or collapse the ribbon। Another key Alt which is used to open the access keys। Tab key, tab shortcut key is used to move to the next cell। Alt F shortcut key is used to open Excel options। Alt plus down arrow shortcut key is used to active filters for cells। Another shortcut Shift plus F2 is used to add or edit a cell comment। Another shortcut Alt plus H is used to select a fill color। Another shortcut Alt plus H plus B is used to add a border। Another shortcut Escape is used to cancel an entry। Another shortcut Enter is used to complete the entry in a cell and move to the next one। Another shortcut Shift plus right arrow is used to extend the cell selection to the right। Another shortcut Shift plus left arrow is used to extend the cell selection to the left। Another shortcut key Shift plus space is used to select the entire row। Another shortcut Page up or down is used to move the screen up or down। Next shortcut key Alt plus H is used to go to the Home tab in ribbon। Another shortcut Alt plus N is used to go to the Insert tab in ribbon। Another shortcut key Alt plus P is used to go to the page layout in the ribbon। Another shortcut key Alt plus M is used to go to the Formula tab in ribbon। Another shortcut key Alt plus A is used to go to the Data tab in ribbon। Another shortcut key Alt plus R is used to go to the Review tab in ribbon। Another key is Alt plus W which is used to go to the View tab in ribbon। Alt plus Y is used to open the Help tab in ribbon। Alt plus Q is used to quickly jump to search। Alt plus Enter is used to start a new line in a current cell। Alt plus F1 is used to make a chart and design quickly। Alt plus F2 is used to save as workbook। Alt plus F plus E is used to export your workbook। Alt plus F plus Z is used to share your workbook। Alt plus F plus C is used to close and save your workbook। Shift F3 is used to open the Insert function dialog box। Control plus F3
is used to open the name manager. Control plus Shift plus F3 is used to create names from values in rows and columns. Control plus Alt plus plus is used to zoom in inside a workbook. Control plus Alt plus minus is used to zoom out inside a workbook. Alt plus Y plus W is used to know what's new in Microsoft Excel. F1 key is used to open Microsoft Excel help. Control plus F4 is used to close Microsoft Excel. Alt plus F plus Z shortcut key is used to share your workbook. Alt plus equals to is used to auto sum a column. Alt plus A plus M shortcut key is used to remove duplicates. Alt plus H plus A plus C shortcut key is used to center alignment of text. Alt plus H plus A plus L shortcut key is used to left alignment of text. Alt plus H plus A plus R is used to right alignment of text. Control plus Shift plus P is used to change the font size. Shift plus F11 is used to insert a new worksheet. Alt plus H plus E plus M shortcut key is used to clear comments only. Control plus Shift plus star shortcut key is used to select the current region around the active cell. तो ये थी हमारी अनदर 50 शॉर्टकट कीज। इसी के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हमारी 100 शॉर्टकट कीज हैं। आई रिक्वेस्ट आप इन शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस कीजिए, और इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और इज़ देयर एनी इशू, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।